Okay, so let's begin. Some delay. क्यों आ रहा है भाई? Anyways, okay, so I think I'm gonna start it. Am I audible? Okay. Yes. Yes. इसको लो कर दे थोड़ा. That's it. I think so. Okay. Come on, me. These questions are going to be solved. Pomodoro. थोड़ा सा हिंट लेना होता है, इसलिए मैं उसको नॉर्मल में सॉल्व कर रहा हूँ. Although I want to be required, but थोड़ा से नोट्स भी बनाने होते हैं, इसलिए मैं that's why I try to solve it without starting the virtual contest. Okay. Okay. So mirror distance of an integer. Mirror distance of an integer. You are given an integer n. Define the mirror distance abs n minus reverse n, where reverse n is the integer formed by reversing the integer n. Return the integer denoting the mirror distance of n. अगर 25 है तो 25 का रिवर्स क्या होगा? 52. ओके, ये करना है. इसको आई मीन दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सा है.
and low. रिवर्स एन ले लो जो कि हो गया हमारा 0 वाइल एन एग्जिस्ट करते हैं तब तक इसको डिवाइड कर दो एन से और तुम राइट एन में ऐड कर दो एन मॉड्यूलो 10 देखो इसमें मॉड्यूलो 10 मारेंगे और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके दे देंगे तो सिंपल है एंड रिमाइंडर एक तरह से रिमाइंडर जो भी है उसको रिवर्स नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर दो दैट्स इट स्ट्रिंग वाला भी तरीका कर सकते हैं बट ठीक है रिटर्न रिवर्स इंटीजर -10 that's it ABS okay oh I actually changed that number okay and then okay and yes I think so it should be done okay first done minimum deletion cost to make all character equal let's go for a minute maybe मिनिमम डिलीशन कॉस्ट टू मेक ऑल कैरेक्टर इक्वल सारे कैरेक्टर को इक्वल करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो बताना है यू आर गिवन ए स्ट्रिंग s of length n and an integer array cost of same length लिखता जाएगा problem is I am not able to extract the actual given information about the terms probably maybe that's why I am lagging you are given an as a string okay
given as a string length n and an integer array cost of same length, where cost I is the cost of deleting ith character. Okay, to delete ith character the cost is given. So return an integer denoting the minimum total deletion cost required. Return an integer denoting the minimum total cost required to make what? To make the character equal. Okay. That deleting the character at index 0, 1, 2, 3, resulting the string C up to this, which consists of equal character. How? And the total cost of all the terms is 11. तो इसमें 10 बचेगा, 5 और 8 चला जाएगा, एक ही रिटर्न करना है क्या? To make all characters required. Okay, समझ में आ गया. So basically the problem is same. A B B A C. Okay, the cost is 1 2 3 4 1 and 10. Okay, once we iterate on this string, अच्छा अगर इसमें ऐसा होता A C, इसमें अगर यही बताओ 2 2 2 3 4 1 10, देन इसमें एक और चीज़ हो जाती है कि कुछ भी रिटर्न कर दो, फिर इधर डिलीट 15, अच्छा दोनों ही केस में इसमें 15 डिलीट हो रहा है. if there is two, then ये कन्वर्ट हो जाता 14. Why? Then we would have been deleting B and C, which is actually 15. And the rest will be A plus A is 11. Okay.
So uh, the what we can do is first select the characters and their cost. Okay, and yeah, that's it. One, select the cost, select the character with the cost, store max. And then return total minus max. That's already minimum. That's it. That's it. Max value character. Not character, but max value of one character. That's it. That's all we have to do. Here's the thing. I don't think keys may. Just make a map and store on everything over there. Unordered map characters in map. It's a value map. Cost map. So we'll iterate on the cost. And is nums size and then cost I would be added to the no, cost character cost. Yes, character cost के SI में स्टोर हो जाएगा and then get the total, accumulate, again cost dot end looks up. We will get the total of all cost of the characters and then we'll find the max.
like it was not even needed, the character. Yeah, you can just store the vector like normalization, cana canacolization. Yeah. uh, Vector cost is 0, and yeah, hey, that's it. और इसी टाइम इसको प्रिंट भी कर लो, एस आई माइनस ए and line, and this is the total cost. Now you can sort it. I just go and find the max of out of vector. Yeah, maxi and max element. That is character cost dot begin, character cost dot end. That's it. Return total minus maxi. That's it. I think so. Nums. It's cost. Any other problem? No. I don't know. Okay, it requires 0. I think so. It should have been as far as I understood the problem. It was simple. I think so. Any other test case? Do you have any other test case in mind? Okay, let's take example of A B C A B C A B A A. So like 1 not 1 5 1 5 not 5 7 1 1. Then what will happen? Yeah, now test. लेकिन आ जाएगा आंसर. Yeah, see, what it returned is 8. What if I add 2 over there? Then it will return 8. Yes, that's it. आसान था. हाँ, ओके, गलत हो गया. What? Long. Okay, the problem is long. It should have been stored long values. And long. Okay. And we will be adding, I don't know whether it's a correct syntax or not, but yes, and here we will be adding just long. मैं भूल गया यार. long 0 L
don't know. I actually forgot to use the syntax. Here what I am actually trying to completely recall from the brain, out of the brain. Am I able to recall the whole thing or not? Syntax problem है. स्टार्टिंग वाले ले लूँ क्या? इसको सही करो. Fix it. Okay, this is not required. This is the only thing required. अब उस वाले में भी काम नहीं करेगा तो इसमें भी हटा देंगे. Okay. Submitted. Nice. Okay. बहुत ही गड़बड़ हो रहा है इसका. Let's move on the third problem. Uh, 26 actually it's दो प्रॉब्लम बहुत आसान थे इसीलिए थे. Okay. Second done, which was easy actually. Minimum number of swaps to avoid forbidden values. Let's say start 0 to 6, 27. Minimum swaps to avoid forbidden value. What does this mean by forbidden value? You are given two integer array, nums and forbidden. Okay. Two integers, nums and forbidden, each of length n. Do not allow something. Not to do something. You may perform the following operation any number of time including 0. Choose two distinct indexes I and j and swap them. Return the minimum number of swaps required for every index I. The value nums I is not equal to forbidden I if no amount of swap can ensure that every index avoids its forbidden value. Return -1. देखो इसमें कह रहा है स्वैप करना है. We have to swap the elements. Return the minimum number of swap required such that for every index I, the value of ith nums is not equal to forbidden. And we can swap between I and j. Yes.
3785। अरे यार ये क्यों लिख रहा हूँ, वीकली कॉन्टेस्ट 481। फाइन, section 3 we have nums, basically a and b, vector a and b. Okay, and thing is that you can choose the two distinct indexes I and j and swap nums I with nums j. Basically one, we can choose swap. Second, return the minimum number of swaps that nums I is not equal to bi. That's it. True for all values. What happened? Shit. अबे यार कहाँ गया? ओके है। else return -1। तो मान लो कि 1 2 3 है, तो इसमें कितने स्वैप लगेंगे? ओके 1 स्वैप लगेगा नॉट, लेकिन इसमें तो हर बार चेक करना पड़ेगा। इसका ये कितना है? इसका कैसे सॉल्व करोगे? क्या रिक्वायर्ड है? ग्रीडी हैश टेबल काउंट।
इसको सॉल्व करने के लिए okay, what we will do first, like there is 1 2 and 3, okay, and we have 3 2 1, so we'll first iterate on it, okay. iterate करेंगे, चेक करेंगे, okay, पहला स्टेप iterate and check, validity, if nums I is not equal to forbidden, then what we will do, इसको ए बी कर दे यार, ठीक है चलो, अगर नहीं है बराबर तब क्या करेंगे, हाँ 1, then I will try to switch the 2 with the numbers who are not same, तो इसमें तो भाई एक और बार राइट करना पड़ जाएगा, I will plus AI is not equal to BG, है ना, उसके साथ स्वैप कर देंगे, तो कैसे होगा, अब ये बन जाएगा हमारा 1, तो इसके लिए एक मैप रखना पड़ेगा, मैप रख लो या फिर एक और वेक्टर रख लो जिसमें which would be storing the validity, is the number valid on the nums or not, so 2 and 3, so एक इंडेक्स ले लो ना, पहला वाला इंडेक्स के साथ चलो स्वैप कर दिया, ठीक है, पहले वाले सिर्फ पहले वाले इंडेक्स के साथ, ओके 1 के साथ स्वैप कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 1 3 and this will become 3 2 1, that's it, so done. But when उसके आगे कंटिन्यू जाता रहेगा, है ना, यहाँ पे एक ऑपरेशन फंक्शन कॉल करेंगे, मान लो
is not equal, एक फंक्शन बना लेते हैं, उसमें ith इंडेक्स को डाल देंगे और नम्स को डाल देंगे और एक वेक्टर को डालेंगे जो कि वैलिड है कि नहीं, वैलिड मतलब कि एक सॉल्वर बना लिया यार, is equal or not, that's it. अगर ये हुआ तो स्वैप कर देगा, जरूरत ही नहीं है ना। तो void solver index I vector nums and नहीं vector is equal, basically it's like a map, like not map actually, validation map. Is equal is equal, ओके सो हमारा इज इक्वल भी बनाना पड़ेगा, उससे पहले मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, थोड़े बड़े एग्जांपल में टेस्ट करें एक बार। ओके एग्जांपल 2 4 4 4 6 6 5 now 4 6 5 5 so okay इसमें क्या करेंगे 4 is same so we will not able to do that on it, or we can do that, we will be storing the only numbers which are not same, so we can swap them. Isn't that cool? Yes, only the indexes which are not same, so we don't have to iterate much on it. and long का तो दिया ही होगा, नहीं दिया, okay. ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा जाएंगे, नहीं जाएंगे, देखो see the only index we have is not equal मैप ले लूँ, इसके पास सिर्फ थर्ड इंडेक्स का बना है, ओके नाउ if it is there then we will swap with it 6 comma 6 comma 4 comma 5 now 4 6 5 5 okay now again that the value is same, so again we will swap with it, okay, because it is same, so 6 4 6 5 and then 4 6 5 5
forbidden इसको forbidden नीचे वाला है forbidden nums अब nums चल रहा है इधर क्यों लिख रहे हो इसको इधर लिख देना ये forbidden हो गया now on first iteration ये हो जाएगा सेकंड में ये हो जाएगा swaps we can say on first swap और I and J तो फर्स्ट स्वैप में हुआ 0 का सेकंड के साथ हुआ J हमेशा अभी तो सेम रहेगा एंड देन ऑन सेकंड स्वैप इट्स स्टिल यहाँ से हटाओ यार पहले इसको 4 क्या था यार 4665 4665 4655 ठीक है आई थिंक स्वैप की भी जरूरत नहीं लिख दो 4665 है ओके सो फर्स्ट टाइम स्वैप करेंगे then it will become because this is same value it will become 6 and 4 6 and 4 once it is 6 and 4 this will become 6 and this will be same as 5 now we will again swap 6 with 4 why because the value is still same so we will again swap the first index with second index once it is same then it will become 4 and 6 and this will be same as 5 okay now again the 6 is different because it is different we will escape and we will swap with it okay so third index go we will swap with second index and once it is swapped then it will become 5
and 6. Okay, so minimum required is 2. Minimum requirement. एक एलिमेंट के साथ मैं स्वैप कर रहा हूँ और ना, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा इस तरह, कुछ और सोचना पड़ेगा। हैश टेबल ग्रीडी काउंटिंग हिंट ले लो। सॉल्व द प्रॉब्लम ग्रीडीली, count the combined frequency of values in nums and forbidden into map frequency। हाँ तो ये तो मैं कर रहा हूँ, already doing that। is not equal to, एक वेक्टर बनाएंगे, इसमें रख देंगे is not equal उतना बड़ा वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, बट बना भी सकते हो क्योंकि भरता जाएगा। if nums I is not equal to forbidden then add in the map is not equal to 0। is not equal to, मार्क कर दो एक तरह से। but what something, there is something more we can do, that if the two elements are same, okay, just switch them, just one swap and another swap, that's it। here what we can do is 6 4 इसको ऊपर कैसे करते हैं यार, okay, just one swap and
what we can do, just iterate from start to end, and if two elements are same then swap them if they are same. So इसकी वजह से तुम्हें वो भी आसान होगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं, करो 5 6 and 6 4 and this will move on I because it is not same, then we will move, it is again not same, we can move, just प्रॉब्लम कर देगी। वो प्रॉब्लम कर रहा है कि हम लोग को एलिमेंट पता ही नहीं है कि उसमें क्या है, तो उसको भी पता कर लो। मेक द मैप, मेक द मैप, मेक द मैप, यस, make the map unordered map. What I am thinking, approach 1. Not minimum steps. इसमें क्या करेंगे कि T4 new approach। अब देखो हम क्या करेंगे, मैप करने की जरूरत क्या है, just take the I1 iterate। देखो स्ट्रैटेजी सिंपल है, स्वैप द सेम वैल्यूज विद अदर सेम वैल्यूज, ठीक, ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन इफ ith value with j
वैल्यू देख, उसको पहले इम्प्लीमेंट करो एक बार, तो आगे का देखें। नहीं, वैसे उससे कुछ नहीं होगा। तुमने स्वैप कर लिया, ठीक है। नाउ इट बिकम्स 4 5 6 and 6 and 4. Now I is here, J is here. बेसिकली J आगे भी चला गया। अभी सेम है। Search a table. ये स्वैप हुए, then 6 and 6 आया। now it is same, swap with the other we can iterate, or we can directly go in the map and swap with the valid values। बात यह है कि सेम नहीं होना चाहिए। देखो, इसमें 2 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू swap with the element that is not same, okay, not equal, as well as
ये तो आइट्रेशन से ही हो सकता है। That's it। अब मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बात लगे। हाँ ओके, this is an minimum swaps to avoid forbidden value। और क्या hints हैं? If any frequency is n plus 1, हाँ 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 देखो बन रहा है। Collect bad points। Let bad pair be the sum of bad counts। Max bad pair the maximum the minimum swaps। अरे यार सारे हिंट पहले ही निकाल लिया, फंस गया था। Today's content like first like मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। int 6 ले लेंगे n-1 and while कब तक आइटरेट करेंगे ये भी नहीं पता है ना। हाँ जब तक सेम नहीं हो जाता एक तरह से। But when minus minus if nums I is their equal। जी तो आई और जे को तब आइटरेट कर देंगे जब सेम होगा। हाँ लेकिन अभी एच के इस पास रहेगी nums I not equal to forbidden I then iterate
Similarly, if nums I nums j is not equal to forbidden j. Okay. एक और कंडीशन लगेगी इसमें, nums I with j on this one array, on this one condition. कितना टाइम बचा है? 19 मिनट. ये अपना अब नहीं सोच पा रहा. सॉल्व द प्रॉब्लम ग्रीडीली. ठीक है, ग्रीडीली ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्वैप कर देंगे नंबर्स को. इफ दे आर नॉट सेम देन आई ट्रेड ओनली ऑन द नंबर्स. If they are same, I is same either nums j is same
Okay. Count the combined frequency of values in nums and forbidden. हाँ, ये उसी के लिए कह रहे हैं ऑर्डर्ड मैप बना के कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज क्या है? You map nums is equal to forbidden I. उससे क्या होगा? एक मैप बनाया मैंने, उसमें डाला 4th इंडेक्स में मैं 4 डाल रहा हूँ, ये क्या मतलब हुआ? ये क्या है? क्या बनाए? पहली चीज तो ये नहीं समझना है, काउंट द कंबाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज इफ एनी फ्रीक्वेंसी, अगर वैल्यू से ज़्यादा है, n+1 से ज़्यादा है तो कलेक्ट बैड पोजीशन। हाँ, बैड पेयर्स रख लेंगे, चलो वो मैं सोचा था। तो वेक्टर में एक तरह से इनवैलिड या इज इक्वल ले लो, वही जो लास्ट टाइम दिए थे। फॉलो लिया, इज इक्वल लिया, इज इक्वल आई में 1 डाल दो अगर if your nums I is equal to forbidden I, that's it.
Okay, what else we can do? I think मैं छोड़ रहा हूँ. हाँ, इसको मैं बाद में देखूँगा. 9 minutes. इस क्वेश्चन में भी लगभग सेम ही है. ग्राफ का है क्या? इसको ज़्यादा लोग ने कर लिया है, इसको नहीं किया है. क्या बात है. ग्राफ का है ना. Total number of interaction cost in tree groups. You are given an integer and undirected tree with n nodes numbered from 0 to n. Question 4. You are given an integer and an undirected tree है basically with n nodes numbered from 0 to n. Tree है 0 to n minus 1. And tree and nodes. This is represented by 2D array edge. 2D array edge of length this. ठीक है. Basically graph में indicates an undirected edge between nodes u and v. ठीक, यहाँ तक समझ में आया. You are also given an integer array group of length n. एक लेंथ n का ग्रुप दिया हुआ है, where group I denotes the group label assigned to node I. ओके, ग्रुप लेबल है कुछ जो असाइंड होता है नोड I को. Two nodes u and v are considered part of the same group if group u is equal to group v. The interaction between u and v is defined as the number of edge on the unique path connecting them in the tree. The interaction between u and v is defined as the number of edge. नोड I को जो असाइंड हुआ है वो लेबल दिया जाता है, और ग्रुप यू और ग्रुप V अगर सेम है, कैसे सेम हो सकते हैं? Return integer denoting sum of interaction cost over all unordered paired, so that u and v सेम हो जाए. एक ही नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए बस. ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप में n और u और v है. अब एग्जाम्पल समझते हैं. The cost is interaction cost between u and v is defined as the number of edge unique path connecting them in the tree.
जैसे 0 और 2 है तो उनका इंटरेक्शन कॉस्ट है 2. 1 and 2 have the interaction cost of 1. The interaction cost between all these things are this. एच केस तो मैं सोच ही नहीं पा रहा. ग्रुप, अभी एक ग्रुप का काम क्या है? जीरो और 2. तो ये 0 1 अनडायरेक्टेड है ना, 2 हो गया. एंड ग्रुप 3 2 3. Output is 2. Node 0 and 2 belongs to group 3. What do you mean by group 3? 0 and 2. Okay. The interaction cost between this pair is 2. Yes. 0 और 2 के बीच का जो इंटरेक्शन कॉस्ट है वो हमारा 2 होगा. हाँ. Node 1 belongs to different group. Form no valid pair. Therefore, the total interaction cost is 2. ग्रुप का काम क्या है? ग्रुप 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 integer of length, where group I denotes the group label assigned to node I. node I को जो group I node label assigned हुआ है वो है तो मान लो अगर ग्रुप 0 है, ठीक है, ग्रुप ग्रुप क्या बोल रहे हैं यार इसको? इसको तो कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे. Post order DFS count how many nodes of each group are in each subtree. हो जाएगा. number of trees. Okay. Tree DP problem involving coloring.
will see it later. हाँ, बाय द वे इसको देख लेते हैं एक बार बस. ओके, टाइम्स अप. Solution time. एक बार इसको देख लेते हैं. मैं एक ही देखूंगा, दूसरे वाले को नहीं देखूंगा. आई थिंक सो, बिकॉज सेकेंड वन रिक्वायर्स ग्राफ एज वेल एज नॉट मच ग्राफ. आई थिंक हो सकता है, DFS ही तो है, ट्री के साथ DFS है. आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम देगा. विल ट्राई इट लेटर. बट इसको देख लेते हैं एक बार. हाउ इज दिस गोइंग टू बी सॉल्व? This like partitioning. It's global permutation feasible minimum swap requirement with duplicates. The two pointer cannot guarantee feasible swap event termination correctness. Also, your code has bug, type of orbiting and unpamp use TB. Can infinite loop. Blah blah blah. What the problem is really is we want to reorder the nums via swap, so that this is like building a permutation assignment. Assign each value occurrence in nums into some index I, but index I is forbid, one value forbidden. This is basically a D arrangement with forbidden values but with duplicates. Feasibility condition most important. क्या कह रहे हैं ये? Step 1 feasibility condition most important. Count V with the frequency nums V. Let pad with the frequency number of indexes I where forbidden I is equal to V. ठीक है, वैल्यू V in the nums. हाँ हाँ, नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहा है. अच्छा,
So too many copies of v but too few allowed slots, तो impossible हो जाएगा. Yes, 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 this is what it was saying. Okay, combined frequency of values in nums and forbidden into map frequency. तो पहले ही हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 अगर हमारे पास जो फ्री स्लॉट्स हैं और सेम फ्रीक्वेंसी वाले, मतलब जिन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनके स्लॉट से, खाली या ब्लैंक और इक्वल इट्स स्लॉट से, देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिटर्न. सो रिटर्न -1. But this approach is completely wrong. And okay, ठीक है, ये कर लेंगे. देन ठीक है, क्रिटिकल चेक हो गया. कंस्ट्रक्ट अ वैलिड अरेंजमेंट. दिस इज द हार्ड पार्ट. स्टैंडर्ड ग्रीडी idea. You have a multi set of values from nums. For each index I, you must pick value r. Forbidden, which is not equal to forbidden. Always pick the most frequent value not equal to forbidden I, like scheduling or greedy. Use max heap priority of count value. मुझे कुछ लगा था ऐसा कुछ होगा कि लेंगे, क्योंकि आइट्रेट कर रहा था. बट मैक्स हीप क्या करेगा? इट विल बी स्वैपिंग द लास्ट नंबर दैट इज नॉट इक्वल टू forbidden value. So take the top value v1. If v1 is not equal to forbidden I, assign it. Else take the second top, assign v2, push back v2 unchanged, decrement assign value count. This creates a valid target array. Minimum swaps and transform nums into target. Once the target is arrangement is fixed, minimum swap to convert one array into another with duplicate can be found by minimum swap to convert one array into another. Minimum swap to convert one array into another with duplicate value can be found. Map each value to q to its target position. Build permutation. हाँ फिर मैं नहीं समझा. Answer the total cycle swap. This is standard minimum swap to reach target arrangement. Okay. Solution please. Short. This is short. What? Crazy. What exactly is the approach? A map, frequency map, and matching. So basically he declared 3 maps and iterated. If the element is same, then increment the count. If element is same, increment the count. And matching.
restore the max matching. What? क्या किया है? काउंट इंक्रीमेंट किया, ठीक है. सॉल्यूशन ये इतना बड़ा सा सॉल्यूशन बना दिया. सेम प्रॉब्लम है. Construct target feasibility. What about this problem? What about this one? Great find, and yes, this solution looks way simpler than heap permutation, but here's the truth: this solution is correct for this problem. And if using a deeper observation, we don't actually need to construct the final array. We only need to minimum number of swaps. Bad indexes are like people sitting in their own forbidden seats. You can relocate two people, but if too many bad people have the same value, they need extra swap because they can't swap among themselves. So is their early heap solution wrong? No, it's correct but overkill. This man-based solution is optimized math solution. इसने क्या किया है? We are given two array A and F. We need to make swap between in A such that A is not equal to F. Holds this. Let to map A store the frequency of element in F. Okay, दोनों की frequency ले लिए. For every element present in A, there are an minus f a. हाँ, तो कोई ना कोई एलिमेंट तो हो गई. नंबर ऑफ वैकेंट स्पॉट वेयर वी कैन प्लेस इट. फॉर एग्जाम्पल 13551513. as a0 is equal to f0, we need swap. Okay, we need swap. So the number of free positions where we can move a0 to is n minus fa. उस नंबर की वैल्यू जहाँ पे एग्जिस्ट करती है उस इंडेक्स में मान लो इसकी वैल्यू है 1. तो फ्रीक्वेंसी मैप में गए, फ्रीक्वेंसी मैप में क्या रखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट.
इसने इंक्रीमेंट किया कि नहीं? हाँ किया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट रखेंगे, तो 1 की फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी और उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के मैंने बता दी। ठीक है, दिस इज already been repeated by 2 times, so there are only 2 positions that is remain 1 and 3. It is not actually changing the array. So if the number of vacant spot is less than frequency of ai, then we can simply return -1. No swapping would avoided at least one case. हाँ, at least these number of equal cases. If swapping is possible, then we need to pick the max. Then we need to pick the max of what? Number of pair possible plus one individual swap. Number of, if swapping is possible, then we need to pick the number of pair possible plus one individual swap, if any. Like 135, 135. There are number of swaps required are one pair swap and one individual swap. मतलब one pair swap, इसका मतलब क्या है? one pair swap और one individual swap. We need to pick the max of number of pair possible है, कितने पेयर टोटल पॉसिबल है प्लस वन इंडिविजुअल स्वैप. और नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल कैसे पता चलेंगे? जो इक्वल नहीं है, विच आर नॉट इक्वल. सो वो हम लोग को मैचिंग से मिल जाएंगे, है ना. तो इसने मैचिंग का भी कुछ यूज़ किया है मुझे लग रहा है. मैचिंग मैक्सी में मैचिंग रख दी है. Here the number of swaps required one pair swap plus one individual swap. One pair swap का मतलब है if the number is not equal then we can swap. What does this mean? One individual swap. Frequency of element with the most, this case is like in this case 1992 194. Here the number of swap are required would have been one pair, but would have been one pair. ऐसे सिर्फ एक ही पेयर है जो swaps required है, but as 19 is matching twice, at least 2 swaps are required. तो इसने वही रिटर्न किया है.
ओके हाँ, क्योंकि इसका फिर मैं बाद में करूँगा, अभी सबमिट करने का कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है ये वाला सेंटेंस, लाइक नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल एंड इंडिविजुअल स्वैप इफ एनी। सो पेयर पॉसिबल का मतलब है इज नॉट इक्वल, यहाँ पे लिख लूँ एनीवेज, ठीक है फाइन। इसका मैं भूल जाऊंगा नंबर ऑफ पेयर्स वाली लाइन को, इसको लिख लो कहीं। वन पेयर स्वैप रिक्वायर्ड, जीबी से ही पूछ लेता हूँ। Was description approach model from this, what exactly the line is trying to say. I found that pair swap means the pairs which are not equal to each other, which are not equal nums, if ai is not equal to fi and individual swap as domain. One pair that fixes two bad indexes at once. Okay, this is pair swap. Individual swap, a leftover single index that can't be paired. Oh, count 3, a bad position.
Fix the last unpaired bad index by swapping with some other index, good index. Okay, this is the individual swap. पहली बार में so pair swap fixes 2 index, but एक index नहीं swap होगा. Fix 2 indexes. So 2 swap required. Okay, जो individual swap मतलब है the value that is same but like okay, एक pair swap fixes 2 indexes of bad valid numbers, bad valid operation, bad indexes, but one individual swap is means that is same. There is a leftover index which cannot be swapped with anyone because everyone is already swapped and bad indexes is end, खत्म हो गया जो कि bad index उसके लिए. समझने के बाद में anyways that's all for today. Okay, see you later, bye.